So this is the first question. Find discriminant of the given quadratic equation. Hence find the nature of roots. जब कभी भी ऐसे हमें quadratic equation दिख जाए, the first thing we should identify is ABC value. A value is 2, B value is -4, C value is 3. हमने बोला है calculate the discriminant. So we should be remembering discriminant formula is B square minus 4AC. Substitute the value -4 का square, -4 A के जगह पे 2, C के जगह पे 3. So this is 16 and this is 8 3s are 24. My answer is coming out to be -8. So this is my discriminant answer. क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, हमें इस आंसर को भी हाईलाइट करना होगा. अब उन्होंने सेकंड सब पार्ट में कहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. दिस बिलोंग्स टू व्हिच केस, 1 2 और 3? थर्ड केस में नेचर ऑफ रूट. जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे? सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, व्हाट आर द रूट्स? रूट्स आर नॉट रियल, अनरियल, नॉट रियल और इमेजिनरी. समझ गए? वेरी सिंपल लॉजिक, simple tarika to solve such question. Similar question we have in number 2. Find discriminant. Once again the equation is given to us. इस equation को as it is मैं use कर देता हूं. My A value is 3, B value is -2, C value is 1/3. फिर से हमें बोला है find its discriminant. So D value is B square minus 4AC. B square is -2 का square, -4, A value is 3 and C value is 1/3. -2 का square is 4. This 3 gone. What is 4 into 1? I got 0. This is my discriminant answer. क्योंकि हमसे पूछा था we should highlight the answer. हमसे अब बोला है find the nature of roots. Pay attention, I said. हमसे पूछा गया है find the nature of roots. So how do we write the answer? Since discriminant is equal to 0, roots are real and equal. But in this question we should not stop here. इन्होंने एक और सब पार्ट ऐड कर दिया है. क्या बोला है? फाइंड दी रूट्स. इफ दे आर रियल, हमें रूट्स निकालने भी हैं. और रूट्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? धृताचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं. जस्टिफाइड. गाइस समझो, क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि हाउ आर वी अप्रोचिंग द क्वेश्चन. यहां पे व्हाट हैपेंड, हमारे को सबसे पहले बोला है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट. हमने कैलकुलेट किया. हमें बोला फाइंड द नेचर, हमने ये भी डिसाइड कर लिया. हमें बोला है अब फाइंड द रूट्स. तो रूट्स निकालने के लिए किसको यूज करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, सॉरी धृताचार्य फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? x is equal to -b plus minus root over of b square minus 4ac upon 2a. Instead of this, can I write plus minus root over of discriminant by 2a? Yes or no? Minus. What is my b value in this question? -2. Plus minus. What is my discriminant value? Root over of 0 by 2 into. What is my a value? Clear to all? Now minus of -2 is +2. ये plus minus 0 ही रहा और नीचे क्या हो गया? 6. So 2/6. My answer is 1/3. 2 बार 1/3 आएगा. Yes or no? These are my answers. That completes my question number 2.